Hello, friends. Good morning. Welcome to Nifty 500 and different sectoral discussion with SD. मैं हूं SD शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, दिस इज टू एज अ वीडियो ब्लॉग ऑफ माइंड और मेरे लर्नर्स जो मेरे साथ एसोसिएटेड है उनको हेल्प करने के लिए। ये जो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट market segment of Nifty. We are going to take a look at the chart. We'll talk about slightly about the macro regarding the stocks of India, and let's see how it goes. So first of all, I'll need the SDRSI X. इसको आप जानते हैं. This is my one of the key momentum indicator. Then we have SD Rainbow Asset Master. That is my another, and in this one, let me first use the mother fountain of gold setup. Here I can take a look at Nifty 125 minutes chart, a comeback today visible. Candle is smaller, taking support at the empty line. And also we knew that there is a strong support line coming up, that is here. I will change the price. It is currently at index 200. I'll change it to regular. Then you'll be able to see the actual price. So here it is flat line, and Nifty has shown strength thoda bahut yahan se. If you bring on the actual candlestick, you'll find out exactly around this area it has found some support. So ये जो upside movement आज दिख रहा है, this is very much natural. It does not mean it is a reversal. It could be a reversal, but it's not clear at this point. ये रहा short term swing का chart. थोड़ा डेली चार्ट को देखेंगे, विच इज द राइट चार्ट टू सी. एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक बाई सिग्नल. वी डिड नॉट बाई ऑन दिस. आई टोल्ड यू द हाई नीड्स टू बी क्लियर्ड. फिर से करेक्शन हो रहा है. आई थिंक निफ्टी कैन कम बैक इन फ्यूचर. आई थिंक दैट निफ्टी डिस्पाइट द सेल सिग्नल इन 125 मिनट्स चार्ट, आई थिंक ये जो लेवल्स है इसका सपोर्ट लेके निफ्टी कैन मेक अ कम बैक. नाउ ये जो यहाँ पे कैंडल्स बन रहे हैं, दिस इज फॉर्मिंग हाफ ग्रीन हाफ रेड, मतलब प्राइस एक्शन न्यूट्रल. मेरा जो कैंडल से कलर चेंज से प्राइस एक्शन समझाते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग है प्राइस एक्शन, कौन सा कलर कितना लॉन्ग है उससे समझ में आता है. और कलर चेंज से समझ में आता है कि प्राइस एक्शन न्यूट्रल है कि बुलिश है या बेयरिश. Currently, price action is neutral as per the daily chart. In future coming days, we can see some strong comeback. And if it happens, you know, the next target will be the flat lines. That is the 25,000 to around 25,190 area. And before that, we have a strong resistance around 24,760. So here है Nifty का picture with the fountain of gold setup. अब मैं देखने वाला हूं निफ्टी 500. एक चीज अगर आप अलोन, मतलब बाकी सब के अलावा अगर आप एक चीज इनकॉर्पोरेट कर पाए इन योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट व्हेन नॉट टू ट्रेड, व्हेन नॉट टू डू म्यूचुअल फंड्स, व्हेन नॉट टू डू एसआईपीज, ये गेम चेंजर हो सकता है. वन ऑफ द फैक्टर दैट आई कंसिडर इज अ वीकली सिग्नल. You have seen beautiful buy signal, went on, Nifty 500 gave awesome run, but now we are in a bearish phase. And it's a beginning of the bearish phase. I'm not saying this could be a go up, and the second round of jab selling aayega, it could be more devastating. So overall, it's not a great phase to jump into stocks, mutual funds, etc. First of all, we should have exited well before.
and current participation should be 1/3 of your capacity. Of course, some stocks तो बढ़ेंगे, जरूर बढ़ रहे हैं. If you look at जो list मैं provide करता हूँ every week, lot of stocks going up in them. PPL Pharma, this is actually not the list. The list is the I have in another trading view account, but I create this list every week. So some of the stocks definitely go up. बट ओवरऑल मार्केट एक बुलिश फेज में नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड्स एसआईपी इसमें रहे. कोई बोलेगा कि अरे सस्ता हो गया, बट तो सस्ता हो गया तो यहां पे बाय करना था ना. 2023 दैट वाज द सिग्नल वाज इट वाज इवन चीपर 14,000, वहां से तो 50% बढ़ गया इंडेक्स. So I think it's not a great phase to be into jump into stocks. However, within that cycle of bigger, I think a comeback in the bull is likely, very more likely. मतलब weekly में जो correction चालू हुआ है, you can see from the green stocks, it can go further up in the coming weeks. That's very, very possible. But I'm not sure that we are going to hit the bullishness again in weekly. That part I'm not sure. That's highly possible. It can go up to these levels and then go for another round of turnaround. Now, इस मामले में ओवरऑल मार्केट रिस्क समझने के लिए we can use the indicator V2 रिस्क मास्टर. ये V2 में चलते हैं. V2 के अंदर है रिस्क मास्टर. So I will apply risk master and I will switch on this one. So overall level of risk, market risk, which is measured by 1, 2, 3, 4 quadrants. And these are more long-term or mid-term risk level, which will be more sustained. India-specific risk, and there are recession risk. So recession risk is special. Of course, it is just risk phase start हुआ है. But overall, this equity drawdown measure ये दिखाता है first for market risk which is low and India specific risk भी थोड़ा कम है. It was not like this, इसीलिए देखिए pressure downside pressure कम हुआ है. It was not like this in these phases. Like let's start from the top. So at these levels, India specific risk was highlighted. एंड जब रिस्क एलिवेटेड रहता है इट्स यूजुअली नॉट अ गुड साइन. और जब सेफ रहता है वी वेट फॉर अ डाउ स्ट्रक्चर. एक डाउ स्ट्रक्चर का इंतजार करते हैं. जैसे इस फेज में, लास्ट फेज में ओवरऑल मार्केट रिस्क तो कम हो गया, बट वी डिड नॉट गेट अ ब्यूटिफुल डाउ स्ट्रक्चर. डाउ स्ट्रक्चर मतलब हायर हाई हायर लो, ऐसे करके एक अप मूव, उसके बाद एक करेक्शन, उसके बाद एक करेक्शन से अप टू दिस पॉइंट एंड देन ब्रेक हायर. दिस विल बी कॉल्ड अ डाउ स्ट्रक्चर, डाउ थ्योरी स्ट्रक्चर. सो डाउ थ्योरी स्ट्रक्चर के हिसाब से वी आर नॉट देयर येट. So I think overall Nifty 500, if I look via Asset Master के जरिए देखेंगे तो it is clear एक beautiful base तो बना रहा है, but it is not fully ready to jump into buy. अब जो ये करेक्शन हुआ बाई सिग्नल के बाद, नाउ ये जो नया हाई बनाने जाएगा, ये लेवल्स को, ये जो लास्ट स्विंग हाई है, स्विंग को तोड़ के above 22,850, that will confirm, yeah, this one will have higher potential to go up towards next resistances 23,150 and then final one 23,500 area. बैंक निफ्टी देख के वैसे कुछ खास नहीं, क्योंकि इट रिमेन्स हेविली बायस्ड बाय फ्यू स्टॉक से, कुछ खास रिप्रेजेंट नहीं करता इन जनरल. बट दिस इज बैंक निफ्टी, इट्स नॉट सो ग्रेट. लेट्स लुक एट सम ऑफ द सेक्टर्स. सेक्टर्स में क्या हालत है.
सेक्टर्स ऑटो नॉट येट रेडी, ऑटो दिख रहा है. इफ आई लुक एट द कमोडिटीज, commodity may be coming back in future. The sell off खत्म हुआ है commodity में, as you can see in the daily chart. We have a green candle, very small, ignored करना चाहिए as a signal, buy के लिए बिल्कुल नहीं, but it's definitely एक signal कि sell off खत्म हो गया है. This is the energy segment, बहुत टाइम से battered हो रहा था, लग रहा है थोड़ा स्टेबिलिटी दिखा रहा है एनर्जी सेगमेंट. सो लेटेस्ट राउंड ऑफ जो कमबैक हो रहा है निफ्टी का, सो लुक्स इन डिफरेंट सेक्टर में. फाइनेंस सेगमेंट एक इंपॉर्टेंट एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा है, मे बी इन फ्यूचर इट विल गो अप. एफएमसीजी सेगमेंट इज द नेक्स्ट, अ न्यू कमबैक, सो दिस इज पॉजिटिव न्यूज कि एक अच्छा बेस बन रहा है जहां से फिर से स्टॉक्स कैन राइज. सो दिस, ये आपको इंकरेजमेंट देता है सेक्टर का पिक्चर कि ये बुलिशनेस जो दिख रहा है इसमें दम है. क्यों? बिकॉज इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन मेजोरिटी ऑफ द सेगमेंट. IT has been very strong, but last 2 days it fell, steady downside pressure. If you look at IT by Nifty, I highlighted IT as strength and uske baad hi fall hua, that's pretty bad. But actually IT में strength tha, it was showing the strength, but not now anymore. In fact, all the strength in the IT is gone. If I compare Nifty to Nifty 500, it's gone. IT बिल्कुल अच्छा नहीं गया. It's not. It was kind of a last जो breakout था. It turned out to be a reversal point. So of course हम लोग गलत हो ही सकते हैं. I would never predict. Market was showing strength, but now the market has been showing weakness. So we'll exit. Better opportunities ढूंढने पड़ेंगे elsewhere. Media segment is up. Some of the media stocks could be coming back. We'll have to NDTV, say for example, let's look at the NDTV stocks showing strength. It can go for a breakout, like see, it can go for a breakout, but weekly chart wise, I don't think the stock is ready. It's getting ready, could be ready in the coming days. So it's not satisfying our criteria, but in general, दिख सकता है कि this is a range and very likely it will break here and can head towards 209. So कुछ लोगों के लिए तो बढ़िया रन हो ही होगा ही, बट जिस फेज में हम लोग एक स्टॉक में रहना पसंद करते हैं, एनडीटीवी इज नॉट देयर येट. सो ओवरऑल सीनेक्स मीडिया में जो कमबैक दिख रहा है इन द डेली चार्ट, इट कैन रिप्रेजेंट सम अपकमिंग अपॉर्चुनिटी. वी आर सीइंग मेटल सेगमेंट अगेन, एटलीस्ट सेल ऑफ कम हुआ है, बंद हुआ है, इवन दो सेगमेंट इज नॉट स्ट्रॉन्ग. इनफैक्ट आईटी हैज टर्न द वर्स्ट. जितना अभी तक पिक्चर देख पा रहा हूं, आईटी इज नॉट डूइंग सो ग्रेट राइट नाउ फॉर द लास्ट 1 and 2 days. It had created a lot of bearish pressure. Now Nifty MNC, of course idea has some risk point from Donald Trump, that is one factor. This is Nifty Pharma, so sell off abate ho raha hai, that is good. We can witness bigger comebacks. पीएससी भी सिमिलर स्ट्रक्चर बना रहा है निफ्टी 500 की तरह. पीएसयू बैंक में इट हैज ब्रोकन दिस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, बट लॉट ऑफ रेजिस्टेंस कमिंग बैक. लुक्स लाइक ये कंसोलिडेशन जो है ये चलता रहेगा इन पीएसयू बैंक फॉर स्टिल सम टाइम मोर एज अ सेगमेंट. रियल एस्टेट और द रियल्टी सेगमेंट, नॉट रियल एस्टेट, रियल्टी इंडेक्स करेक्टिंग. ओवरऑल इसमें पहले ही हम लोग बुलिशनेस देखे थे, बट बाकी सेगमेंट जैसे ही और बुलिश हो रहे हैं. ये आईटी, रियल्टी जो पहले लीड कर रहे थे, दे आर अ लिटिल बिट ऑफ सफरिंग मोड में. कंज्यूमर ड्यूरेबल सिमिलर, दिस इज हेल्थ केयर विच इज सिमिलर टू फार्मा. सेल ऑफ जस्ट स्टॉप हुआ है विच इज गुड. Then I have oil and gas index, as I shown in energy, finally some comeback. So some of the stocks says Reliance good,
Reliance Industries Limited has finally taken a pause, forming a base. ये हमारे TMPV के हिसाब से रेडी नहीं है, बट मे बी सम पीपल जो डेली में खेलते हैं रेंज में, लेटर ऑन रिलायंस कैन रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी. तो ये जो मार्केट का कमबैक है मुझे दिखा, दिस लुक्स मोर ब्रॉड बेस्ड. मिड कैप बेस बना रहा है. इफ यू लुक एट स्मॉल कैप, ये भी बेस बना रहा है. इनफैक्ट स्मॉल कैप थोड़ा हायर स्ट्रेंथ दिखाया था एज पर लेटेस्ट एनालिसिस. निफ्टी 100 ये भी बेस बना रहा है. सो ओवरऑल एक बिफोर वी हिट द हॉलीडे एटलीस्ट एक पॉजिटिव बेस बिल्डिंग नजर में आ रहा है. एंड एज इट इज स्प्रेड अक्रॉस द सेक्टर, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड to Nifty come back or go for some bigger upside. And as let's put the Nifty chart, यहाँ पे Nifty का चार्ट लगा रहे हैं. And what has been driving the Nifty? Nifty को क्या ड्राइव कर रहा है? अगर मैं ऐड करूं यहाँ पे, I think this has been one factor. Exactly not this, it's more to do with the interest rates. So this one I am making it inverted क्योंकि opposite direction में जा रहा है. You can see such a close relationship maintain हो रहा है between dollar index and Nifty. So what has been driving the dollar? हम लोग डिस्कस कर चुके थे. What has been driving the dollar is the interest rates, and that's where the key lies this time. Be extremely cautious. Let's switch the dollar down and let's put the interest rates now. And let's make it inverted again. Sorry. Okay, this is dollar inverted. It will remain. This is the interest rates. Now you can see what has been driving the Nifty. So this is one of the key risks. I think this is the single biggest risk I personally think that the stocks have, that our companies have. I think Adani dollar debt debacle is not over. ये मैं bribery case के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ. That's whatever it may happen. But I'm talking about those dollar loans. They are going to be demand of higher interest rates. Not going to be an easy walk to refinance those loans. Easy walk means they have to pay some hefty amount now. So Nifty 50 has been the US interest rate, or the long-term interest rate has been a key factor this time around, driving many asset classes. If we look at, say, gold, some phase gold Nifty walk together, some phase they walk inverse. तो रिलेशनशिप जिसके साथ हम लोग अवेयर हैं, those are going haywire. We are seeing volatility in the relationships. ऐसा क्यों हो रहा है? Because we are at a tectonic shift. I personally think that market participants or the financial market or the companies have not properly priced this one in. We have broken a very long-term trend line. If we look for, question is, are we moving on to these phases where interest rates rising was the phenomenon? Have these long duration of low interest rates, prosperity, shorter debt cycles, are they over? Are we going to long-term debt cycles? This question usually
जो मैं पढ़ाता हूं इन द क्लास, जो मेरे क्लास कर चुके हैं, यू नो व्हाट आई टीच अबाउट माय वन गुड ट्रेड, दैट इज मोर ऑन द शॉर्ट टर्म डेट साइकिल्स और शॉर्ट टर्म की साइकिल्स, डॉलर क्राइसिस साइकिल्स ऑफ द मार्केट. However, I'm considering if we are on a verge of some real big shift which may happen once in a generation, like it happened in 1980. That prosperity lasted for almost 40 years, a falling interest rate environment where we have probably moved into a rising interest rate environment. Yet this has prompted me to study more books on historical events and historical phenomena so that I remain better prepared for these major macroeconomic changes. And I personally think market, not the other, it has properly priced in what if the interest rate shoots up further. So that's where I'll leave you with the thoughts. All the best from my side to your trading. And as always, keep trading.